Hi friends, welcome back to the channel. My name is Vaibhav Goenka. I'm currently pursuing my BBA from IIM Bangalore. And in this channel, I guide you with preparation strategies and techniques, which is going to help you crack various competitive exams like IPMAT and CUET. Okay. So let's begin today's video. We are going to cover various topics, not various, but yeah, we are going to cover a very crucial topic on how to prepare for IPMAT 2026 by self-preparation. See, I am a kind of guy who don't recommend coachings. I believe a coaching only adds a little bit value. It's more on your self-preparation journey. How much you are being consistent, how much you're dedicated, and how much you're practicing daily. What I believe a coaching adds value only in terms of mentorship कि तुमको आज ये बेसिक टॉपिक करना है, तुमको ये टॉपिक यहाँ से पढ़ना है या एक्सेट्रा एक्सेट्रा क्वेश्चन तुमको कहाँ से लगाने हैं. बट द मेन थिंग इज तुम कैसे पढ़ रहे हो, क्या जो तुमको टास्क मिल रहे हैं दिन में क्या उनको तुम ढंग से कर रहे हो, आर यू फॉलोइंग द स्ट्रैटेजी. प्लस कोचिंग आर एक्सपेंसिव, राइट? सो in order to avoid all of these things and get a very particular keen strategy and resources जहां से तुम फ्री में आईपीएमएट की प्रेप कर रहे हो, अगर यही आपका गोल है तो वॉच दिस वीडियो टिल द एंड एंड ऑल ऑफ दीज क्वेश्चंस विल बी कवर्ड फॉर यू. अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना एंड लाइक कर देना वीडियो को. इट विल हेल्प अस टू ग्रो. एंड चलो लेट्स बिगिन. So, as you can see it on my screen, the first title is Every Hour and Step in Right Direction. What does that mean? It means, in simple sense, कि right guidance plus consistent efforts is equals to offer letter from IIMs. Acha, do you know the difference between someone who is getting into an IIM and someone who is not? It's only the consistent thing. ठीक है? अगर कोई भी एस्पिरेंट मन लगा के 4 महीने पढ़ ले और उन 4 घंटे में रोज 5 hours डेली या 4 hours डेली दे दे, it's easy to crack IPMAT. Okay? IPMAT is not difficult exam. IPMAT is for those who are being consistent. So consistency is the key. So this statement, consistency is the key, was told to me by my IPMAT teacher. But at that time when he told me, I was like, okay, what does that mean even? But now, after not able to crack IIM Indore, I realized those things. Yeah, he was right that consistency makes a difference. Now, when I'm preparing for my CAT, I can see the thing. I have seen many aspirants, over 1,000 aspirants, and I have seen one thing in that journey कि जो लोग consistent रहे हैं, who have prepared daily without missing a single day, they had much better results than those who did not. So remember that thing, consistency is the key. ओके, वेरी इंपॉर्टेंट. अब एक राइट स्टेप, एक राइट डायरेक्शन में कैसे लेना है उसके लिए मैं बता दूं, मैं रोज स्ट्रीम करता हूँ इवनिंग में. ठीक है? सो यू कैन ज्वाइन दैट एट 10 PM, गेट क्लियर टू योर डाउट्स. ठीक है? तुम अपने आ सकते हो. यू कैन आस्क मी, मैं आज मैं ये पर्टिकुलर टॉपिक किया है, मैं नेक्स्ट टॉपिक कौन सा करूँ. ठीक है? मैंने ये टॉपिक के लिए मैं कितने क्वेश्चन के लगाऊं, किस लेवल ऑफ डिफिकल्टी के लगाऊं, कहाँ से लगाऊं. ठीक है? ऑल ऑफ दीज थिंग्स. प्लस हम लोग एक सेल्फ प्रिपरेशन आईपीएमएट बैच लॉन्च कर रहे हैं उनके लिए जो सेल्फ प्रिपरेशन कर रहे हैं. ठीक है? तो दिस इज द मेंटरशिप बैच वी आर लॉन्चिंग. इट सेज राइट गाइडेंस, नो एक्सपेंसिव कोचिंग एंड जस्ट रिजल्ट्स. ठीक है? What you will get in this batch is a structured plan and everyday classes or everyday interaction sessions at 7 PM. So we can interact and you can be accountable with me directly. Okay? You will be framed in a new WhatsApp group jahan pe you will be just finding dedicated IPMAT aspirants. You can also book a one-on-one session which will be included a part of this 199 rupees per month plan. So you can book a one-on-one session for free in the month. You will get time management techniques, you will get strategy sessions for the sessions like how you have to do quants question, verbal questions, and other such techniques which are like commonly told in the coachings as well. Okay? So you will also get weekly topic structures like तुम्हें कौन से topic से कितने questions करने हैं, किस book से करने हैं, किस level के करने हैं, all of these things. Okay? So it will be like a fully focused self preparation batch, like a mentorship batch. Okay? So let's come back to the self-preparation topic कि कैसे क्या करना है. First of all, is there enough time? One specific question which people ask me right now. Yes, there is a specific, like if there is enough time. What I believe and what I've seen with various IPMAT students' journey, 750 hours is enough for an average student as well. So if you are an average student, 750 hours is something you will be able to crack IPMAT Indore as like you can convert IIM Indore with this 750 hours. Again, so as you already know, it's like 9 months down the lane, around 270 days. So if you will divide 750 by 270, you will get approximate 3 hours per day. Okay? So preparing for 3 hours per day will convert IIM
IIMs फॉर श्योर, ठीक है। सो स्टार्ट। अब 3 आवर्स में कैसे डिवाइड करना है, कौन को कितना टाइम देना है, वर्बल एबिलिटी को कितना टाइम देना है, लॉजिकल रीजनिंग को कितना टाइम देना है, लेट्स डिस्कस अपॉन दैट, ठीक है। व्हाट आई पर्सनली प्रिफर इज दैट कॉन्ट्स को आप अराउंड 1.5 आवर्स मिनिमम दो एंड मैक्सिमम 2 आवर्स, एंड डिपेंड्स कि तुम्हें कितना कॉन्ट्स पे फोकस करना है। इसके अलावा यू कैन ऑल्सो, इसके अलावा वर्बल के लिए एटलीस्ट 45 मिनट्स की प्रैक्टिस डेली प्लस क्वालिटी रीडिंग, ठीक है। फिलहाल के लिए लॉजिकल रीजनिंग को कीप असाइड एंड डेडिकेट मोर ऑफ योर टाइम टू क्वांट्स, ठीक है, एंड वर्बल एबिलिटी, बिकॉज लॉजिकल रीजनिंग इज समथिंग जो तुम आराम से कर पाओगे आफ्टर दिसंबर एज वेल। सो ट्राई टू कंप्लीट योर क्वांट सिलेबस बाय दिसंबर, लाइक 2026 में जब जाना, डोंट गो along with any specific topic left to study, okay? Every exam is different, every process is different, and IIM Indore strategy is different from jipmat strategy, and jipmat strategy is different from IIM Rohtak strategy. Same for other IIM exams like IIM Bangalore BSc, IIM Kozhikode BMS test. No. So this is something you should keep in mind, that every exam is different and every exam requires a different strategy. Okay. So how will you get familiar with these things is by giving mocks. What I personally prefer is that give around one mock per week or 2 mocks in a month. This is because you will get familiar with the syllabus. लोग मुझसे पूछते हैं कि भैया पर मेरा कभी सिलेबस ही खत्म नहीं है, शुड आई गो विद द मॉक्स? माय आंसर इज यस यार, मतलब मॉक्स देने में कोई बुराई नहीं है और फायदा ही है इनफैक्ट, ठीक है। सो मॉक्स दोगे तुमको पता चलेगा, अच्छा दिस माय वीकनेस, मुझे यहाँ पे इंप्रूवमेंट और करनी है, चाहे सिलेबस कंप्लीट होना हो, यू हैव टू गिव अ मॉक। अच्छा कौन सी बुक्स वगैरह पढ़नी है, एक बार कौन सी बुक से पढ़ना है उस पर अगर बात करा जाए, तो आई प्रेफर कौन के सर्वेश शर्मा क्वांटम कैट। इन सारी बुक्स की तुमको लिंक मिल जाएगी इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, यू कैन परचेज फ्रॉम देयर। और वर्बल एबिलिटी के लिए यू कैन गेट वर्ड पावर मेड इजी की वोकैबुलरी बुक, विच इज अ वेरी फैंटास्टिक बुक फॉर वोकैबुलरी। मैं आइटमार्ट इंदौर की वर्बल एबिलिटी की गाइड की गूगल ड्राइव लिंक अटैच कर दूंगा इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, तुम एक बार उसको चेकआउट कर लेना। एसपी बख्शी बुक को परचेज कर लेना, लाइक एसपी बख्शी इज अ काइंड ऑफ बुक जो तुम्हें ऑन सॉफ्ट कॉपी मत यूज करना, उसकी हार्ड कॉपी यूज करना, ठीक है। दैट इज समथिंग आई प्रिफर। अच्छा लॉजिकल रीजनिंग के लिए कैसे प्रिपेयर करना है वो तुम्हें दिसंबर के बाद ही करना है, इसकी इसलिए उसकी वीडियो में अपकमिंग सेशंस में और ले आऊंगा, ठीक है। तो सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि डेली टास्क क्या करें। तो मैं जो जनरली रिकमेंड करता हूँ कि 1 आवर से डेली करनी चाहिए, इतना तो बेर मिनिमम करना ही है, ठीक है। 20 मिनट्स ऑफ क्वालिटी रीडिंग, क्वालिटी रीडिंग कहाँ से कर सकते हैं, कैन रीड वेरियस बुक्स ऑफ वेरियस इंग्लिश ऑथर्स लाइक जॉर्ज ऑरवेल, ही इज अ वेरी गुड ऑथर फॉर लिटरेचर वर्क। वी हैव various authors, Indian authors as well, जिनकी तुम start कर सकते हो by reading. For quality reading, go ahead with newspaper articles. That is something editorials which I prefer. A1 essay कोई कह रहा है पढ़ने के लिए, it's up to you. I don't recommend A1 essays because A1 essays are very lengthy. But yeah, it will definitely help you to improve your comprehending skills for sure. ठीक है। अच्छा 3 to 4 DI सेट्स डेली इन द वीक करने, ठीक है। इन द वीक यानी तुम हर 2 दिन में एक DI सेट सॉल्व कर सकते हो, इससे क्या होगा, एक प्रैक्टिस हैबिचुअल बन जाएगी। और IIM इंदौर में DI सेट आता ही आता है, विच इज लाइक अ वेरी गुड डिफिकल्टी, ठीक है। सो DI में ध्यान देना, 3 to 4 DI सेट्स इन अ वीक विल वर्क आउट। अच्छा 10 क्वांट्स क्वेश्चन डेली, इस पे भी ध्यान देना है, ठीक है। सो अगर तुम देखो कि तुम्हारे पास 270 डेज है, राइट, टू 270 × 10 यू विल बी कवरिंग 2700 क्वांट्स क्वेश्चन। और अगर इस 2700 क्वेश्चन में बस वेराइटी होगी, यानी तुमने हर टाइप के क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर रखा होगा, दैट विल बी लाइक अ बूम ब्लॉकबस्टर, ठीक है। तो क्वांट्स में तो इसके बाद करने के बाद बहुत ही अच्छी परसेंटाइल आने के बहुत ही अच्छे चांसेस हैं इन द जिप मैट एज वेल, और इन दी IP मैट इंदौर और रोहतक एज वेल, ठीक है। सो 10 क्वांट्स के क्वेश्चन डेली। अच्छा अब अगर हम लोग अपनी YouTube की प्लेलिस्ट पे तो आएंगे ही आएंगे, उसके संग संग वी आर लॉन्चिंग अ मॉक पोर्टल दिस नवरात्रि। सो इफ यू वांट अर्ली डिस्काउंट्स यू कैन फिल द फॉर्म गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स टू गेट अर्ली डिस्काउंट्स, बट वी विल सेंड यू द प्रोमो कोड्स एंड आई प्रॉमिस यू दीज विल बी हाई क्वालिटी मॉक्स एट अफोर्डेबल प्राइस। लाइक जो अभी कंपटीशन में चल रहे हैं वेरियस अदर कोचिंग, इनके प्राइसेस से 50% डिस्काउंट्स, ठीक है। सो वेट फॉर देम एंड बाय देम, ठीक है। Now let's get ahead with the YouTube playlist or the Excel sheets. I have a lot of fans of Excel sheets, so I have made one Excel sheet right now, which you can see it on my screen. And अब इस एक्सेल शीट की अगर हम लोग बात करें तो इसमें मैंने स्पेसिफिक टॉपिक्स मार्क कर रखे हैं जो तुमको पढ़ने हैं। यहाँ पे देखो जो ग्रीन से मार्क है, यानी ये टॉपिक्स की वाली वीडियो तुमको देखनी ही देखनी है, कैन नॉट अवॉइड देम। एंड येलो वाले जो ये हैं इनको तुम अवॉइड कर सकते हो,
Okay. Then we have for English, we have Nimisha Bansal कि तुम verbal ability के video lectures देख सकते हो. It will help you to improve. Then we have Crack You में you can learn about RCs. आई कांटेक्ट की जो आरसी प्रैक्टिस की वीडियोस हैं दिस आर वेरी गुड. सो आरसी प्रैक्टिस करनी है तो यू कैन सॉल्व दिस. ठीक है, सॉल्व देम. जजो स्पीक्स में तुमको पता चलेगा कि तुमको ये आरसी एक आरसी को कैसे करना है. ठीक है, सो वॉच आउट इस वीडियोस एज वेल. ओके, बाकी दीज वीडियोस आर फैंटास्टिक. ठीक है, जो मैंने मार्क नहीं कर रखे हैं यू कैन अवॉइड दीज. बाकी जो ग्रीन में है, उनको तो एक बार देख लेना अच्छे से. अच्छा, कुछ लोग आएंगे कहेंगे कि भैया ये तो कैट की वीडियोस हैं, ये आईपी मैट का एग्जाम है. तो भाई एक ही समझो, कैट और आईपी मैट का सिलेबस बिल्कुल सेम है. कैट डिफिकल्ट एग्जाम है इसलिए उसकी डिफिकल्टी ज्यादा है, राइट. आईपी मैट इज ऑन द इजियर साइड. सो क्या है कि क्वेश्चन की डिफिकल्टी में फर्क आएगा. सो ये लेक्चर है तुम्हारे कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए. सो इन डेप्थ में तुम अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करो एंड देन प्रैक्टिस गुड क्वालिटी क्वेश्चंस. ओके, दिस इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट टू कंसिडर. सो दिस एक्सेल शीट की तुम्हें लिंक मिल जाएगी इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. चेक इट आउट. ओके, एंड नाउ लेट्स कम बैक टू आवर. ओके, ऑल इज डन. वाओ. तो इस एक्सेल शीट को लगाना स्टार्ट कर दो. मेंटरशिप बैच ज्वाइन करना है तो लिंक इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. यू कैन ज्वाइन द mentorship batch. And कोई और क्वेश्चन हो related to mentorship batch, you can call me or message me on my WhatsApp number, which is given in the description box as well. ठीक है, so thank you so much for watching. I hope if this I hope you like the video. Make sure to hit the like button as well and channel पे अगर नए हो subscribe भी कर लेना. Thank you so much for watching.